Welcome back guys, myself usual company secretary from Jaipur and Delhi. In this video we are going to discuss about filing of soft tax return. Which companies are required to file the soft tax return and what are the prerequisite requirement for filing a soft tax return, what are the documentation required for filing a soft tax return and what are the process for filing the soft tax return. So first of all, for filing the soft tax return you have required to apply the soft tax number on the basis of software. When you receive the soft tax number, you have to required to file the soft tax return, right, every month and quarterly basis, right. So which companies are covered in filing of soft tax return? The companies who are dealing in software export and companies which providing the IT services to the person located in the foreign territory. So first of all, what are the purpose for filing the soft tax return, right? First of all, certifying the value of export in terms of service rendered, right? It must be filed in soft tax form. तो सबसे पहला जो पर्पस होता है वो ये होता है. एंड सेकंड पर्पस द एंश्योर कंप्लायंस इन द फॉरेन एक्सचेंज एंड फेमा एक्ट 1999. इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट होता है वो होता है अवॉइडिंग अंडर रिकॉर्डिंग और मिस रिपोर्टिंग ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग entirely received through software export. And in addition to that, who needs to file the soft tax form? First of all, you are STPI registered exporter. If you are a STPI registered exporter, then in such case you have required to file the soft tax return. Right. If you are dealing in software export, IT consulting and IT enabled services, and you must also comply the FEMA regulations and FEMA Act 1999 as well as the RBI guidelines in regard that. After that, this requirement of filing the soft tax return is also applicable on the non-STPI exporters. If you are non-registered STPI businesses, in said case also you have required to file the software export details, IT export services details, right, in that form. अब हम बात करते हैं आगे कि आपको जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है. सब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिक्वायर टू ऑब्टेन ए सॉफ्ट टैक्स नंबर, right. Each invoice of software export, right, needs to be unique soft tax number and RBI issue through STPI portal. Thereafter complete the online soft tax form. जो आपको सॉफ्ट टैक्स फॉर्म होता है वो कम्प्लीटली फिल करना है, लाइक एक्सपोर्ट इनवॉइस, डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सपोर्ट सर्विसेज, टोटल इनवॉइस का अमाउंट कितना है वो सब आपको यहाँ पे मेंशन करना है. देन आपको अटैच करना है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक इनवॉइस एंड कॉन्ट्रैक्ट, सॉफ्ट टैक्स लेटर, डेटा कम्युनिकेशन, राइट. All of the information required to be mentioned in the form. Thereafter आपको क्या है सर्टिफिकेशन फॉर सबमिशन, एक्सपोर्टर को जो है सबमिट करने हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर सर्टिफिकेशन ऑन STPI पोर्टल, राइट. आफ्टर एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन कंप्लायंस, जो रेगुलेटरी एजेंसी जैसे RBI एंड FEMA उनको सॉफ्ट टैक्स जो फाइलिंग है वो करनी जरूरी होती है. इसके अलावा जो है उनको टैक्सेशन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के अंदर जो है GST रिफंड्स भी यहाँ पे मिलेंगे, तो उसके लिए भी आपको एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन ये सब देनी होती है. तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा अभी तक कि जो सॉफ्ट टैक्स रिटर्न है वो किसके रिगार्डिंग फाइल होगी, कैसे फाइल होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, बेसिक पर्पस क्या है फाइल करने का, वो हम सब यहाँ पे देख रहे हैं. ठीक है. तो आपको जो एक्सपोर्टर के अंदर डील करते हैं या फिर IT सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं उन सभी को STPI रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी होता है. It's a mandatory requirement if you are a software exporter or you are a exporter of IT services. So I hope guys you are able to understand what are the process of filing the soft tax return. Thank you guys for watching this video. If you have any doubt regarding that, so you can also contact on the number given on the screen. Thank you.